तो चलिए अब बात करते हैं LTI के नंबर्स पर। कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें, एक्चुअली नंबर्स हैव बीन बेटर देन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। क्विकली मैं आपको बता दूं, रेवेन्यूज अप ऑलमोस्ट 10%, डॉलर रेवेन्यूज अप अबाउट 9%। एबिट की बात करें तो 14.5% हायर it's coming at, in fact estimate से भी ज्यादा है। Margins have also been higher 17.9% and PAT is almost up 11%। खास बात है कि कंपनी की ये बेस्ट एवर क्वार्टरली sequential growth है since listing, so it's good set of numbers coming in। चलते हैं सीधे संजय जिलोटा, who's the MD and CEO at LTI। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नव वर्ष की शुभकामनाएं एंड कंग्रेचुलेशन सर, नंबर्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो कि 9.2% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसा मैंने कहा बेस्ट एवर क्वार्टरली सीक्वेंशियल ग्रोथ देखी गई है सिंस लिस्टिंग। की ड्राइवर्स क्या थे सर, और क्या ये अब सस्टेनेबल होगी आगे? So thank you for having me, and नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। ग्लोबली आपके सवाल का यही कहना चाहूँगा कि ग्लोबली देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, मार्केट में बहुत डिमांड है अभी, बिकॉज एवरीवन इज ऑपरेटिंग वेरी डिफरेंटली। इस समय को हम लोग ग्रेट रिस्ट्रक्चरिंग का समय बोल रहे हैं, बिकॉज सब कुछ वर्कफोर्स, वर्कप्लेस, एवरीथिंग इज चेंजिंग. Every industry, every vertical has to operate in the new normal where you and I are working from, not working necessarily from homes. And this is what is leading to ये टेक्नोलॉजी एक सेवियर है जो इस सबको बांधे रखा है, राइट? सो अगर कोई डिफरेंट काम करना चाहता है, डिफरेंट इंश्योरेंस करना चाहता है, बैंक क्रॉस सेल करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, कोई बैंक में तो नहीं जा रहा है इस समय. सो हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू डिजिटली एंगेज द कस्टमर? सो टेक्नोलॉजी हैज बीन द सेवियर. And that's what is leading to the robustness of demand in the marketplace as they do digitization and automation work. जो करना बहुत जरूरी हो गया, तो वो बोलते हैं कोविड हैज ड्रिवन द डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन वर्क ऑन स्टेरॉइड्स, बिकॉज ये बहुत जल्दी करना पड़ रहा है, एंड दैट्स व्हाट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ डिमांड. उसके बाद एक और रीजन है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कोविड में आर कस्टमर बेस्ड. वेस्टर्न ज्योग्राफीज में यू आर हियरिंग थिंग्स लाइक ग्रेट रेजिग्नेशन, यू आर हियरिंग थिंग्स लाइक फायर विच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. यूएस में फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर का डेटा मैं बता सकता हूँ, जहां तक मुझे याद है कि 10.5 मिलियन जॉब्स थे और 7.5 मिलियन लोग अवेलेबल थे. बट 7.5 मिलियन लोग ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं. दे हैव सीन दैट दे डोंट नीड टू वर्क एंड लॉट ऑफ देम हैव डिसाइडेड नॉट टू गो बैक टू वर्कफोर्स. So that gap which is there, our customers भी हमारे, इनका attrition भी double digit में आ गया, which has unheard of. They have never seen this before. तो उस समय बोल रहे हैं कि that's why you're seeing a lot more, and the price points have also gone up for them because supply or demand. जब demand ज्यादा है और supply कम है तो price, the salaries have gone up, and that's what leads to more work being done from offshore. So आप अपनी सारी IT companies की देखिए, offshoring increase हो गई है. When there's a lot more to be done, demand is a lot high, and on top of that attrition is high, global resignation theme is there. वो demand marketplace में हर vertical को operate करती है. तो इसमें ना कोई कंपनी, ना कोई वर्टिकल, ना कोई कंट्री आइसोलेटेड है. एवरीवन हैज टू चेंज. ओके, वंडरफुल सर। तो डिमांड की क्यों इतनी बढ़िया पोजीशनिंग है वो आपने हमें समझाई, और ऑब्वियसली कोविड की वजह से, जो टेक यूजेज की वजह से हम देख रहे हैं इसकी डिमांड आगे भी बढ़ते हुए दिख रही है। सर, मोस्ट आईटी कंपनीज हम देख रहे हैं मार्जिन्स पर प्रेशर दिख रहा है, फ्लैट या फॉलिंग मार्जिन्स आए हैं ड्यू टू वेज हाइक। आई मीन ऑब्वियसली आपने बात भी की एट्रिशन की, लेकिन आपकी मार्जिन्स में देख रही हूँ 17.9% इज एक्चुअली ग्रोन। तो कैसे फैक्टर्स थे सर जिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू बेटर मार्जिन्स, और क्या अब ये नंबर्स सस्टेनेबल होंगे? देखिए, हम एक गाइडेंस देते हैं. हम हमारे गाइडेंस हर साल, हर क्वार्टर, हर एनालिस्ट डे की वेरी सिंपल है. वी वांट टू बी अ ग्रोथ कंपनी. वी विल बी इन लीडर्स क्वाड्रेंट इन ग्रोथ, इफ नॉट बी द लीडर, एंड वी विल कीप द नेट इनकम बिटवीन 14 to 15%. राइट? सो दैट्स अ वेरी सिंपल. सो दैट्स अ सैक्रोसैंक्ट थिंग दैट हम उसको चेंज नहीं करेंगे. और वी बिलीव वी वांट टू इन्वेस्ट व्हाटएवर मोर वी मेक इन बैक इनटू बिजनेस. दैट्स द फिलॉसफी विद व्हिच वी ऑपरेट. सो पहला आपको ये जवाब दे देता हूँ कि कहाँ ग्रोथ आई है. 17.9% एबिट जो हुआ है वो 70 बेसिस पॉइंट ऊपर है पिछले क्वार्टर से. इसमें 40 बेसिस पॉइंट्स जो ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से आए, और 30 बेसिस पॉइंट करेंसी बेनिफिट्स की वजह से आए. So now typically अगर growth is the biggest lever for margin expansion in IT services.
तो अगर growth high है, that helps you increase the margin. And operationally, we were able to drive some more. While utilization has still come down because we are still ramping up, hire, train, deploy kind of talent for future growth. But operational efficiencies and higher growth has led to this margin expansion. अगर हम वर्टिकल्स की बात करें, आपने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जबरदस्त इंप्रेसिव ग्रोथ 19% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ. बिगेस्ट वर्टिकल ऑफ कोर्स बीएफएस है आपका, व्हिच हैज क्लॉक्ड इन डबल डिजिट सीक्वेंशियल ग्रोथ. ये दोनों वर्टिकल्स का आगे क्या आउटलुक लग रहा है सर अगले 2 क्वार्टर्स में? या सो आप अगर सालाना देखें, ये क्वार्टर एंड क्वार्टर में कई बार एबरेशन हो आते हैं, बट अगर सालाना ग्रोथ जरा देखा जाए, बीएफएस हैज ग्रोन 38% ईयर ऑन ईयर. Manufacturing has grown over 30% year on year. High tech and media and entertain has actually, while quarter on quarter growth is low, but year on year basis पे 44% growth है. Others, which include services revenues, has grown 37%. So सबसे बड़ी बात है, if you look at the results for us, Swati, you got to understand it has been a holistic growth across verticals. All geographies for us have grown over 25%. North America has grown over 25%. Europe has grown over 25%. Rest of the world has grown over 25%. Europe, which typically हमारे पास growth was a little less than North America, has grown over 30% on a year to date basis also. Top client bucket जो हम report करते हैं, top 5, top 10, top 20, all of them have grown about 25% on a year on year basis. एक हमने $50 million में एक अकाउंट भी बढ़ाया है. इस साल year to date हमने जितने अकाउंट खोले हैं, which is the highest number of accounts we have opened in any year since the time we have listed, right? So these are all the factors. I think it's holistic growth होनी चाहिए, not a one vertical. So that's why I keep saying look at year on year basis. अगर एक vertical drive करता है, you might have a problem, but you have to have a whole set of verticals which have to drive the growth for the company. Finally, sir, आपके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है for the merger of its 3 wholly owned subsidiary companies. एक हमें समझा सकते हैं सर रैशनल क्या है, आगे किस तरीके का इस पर काम होगा? देखिए, ये as companies operate, most of these, I think if I'm not wrong, all 3 are subsidiaries of companies that we acquired. So what typically happens is, I'll just give you an example. Maybe there was a company, Rultronics or QLogic, उनके UK का subsidiary था. LTI का subsidiary is already there. Why do we need 3? So we move the employees to one subsidiary because there's a lot of burden of regulatory reporting for each subsidiary or branch. And when you have and every acquired company had these branches as well. So the commonality hoti hai, that has to be regularly, you keep phasing out and amalgamating back to the business. दो चीज पहले करते हैं, you move the employees first to the parent organization and you move all the contracts there. I would not read anything in it because it's just administrative work, nothing else. For example, we have 53 subsidiaries/branches and we operate in 33 countries. Right, so 33 subsidiaries and branches तो होंगे ही. उसके बाद when you have subsidiaries over a period of time, as you move things, you just keep rationalizing, so you reduce the operational burden on it, nothing else. Okay, sure. So ये है rationale. Thank you for explaining us. Quickly सर, आखिरी सवाल, डील पाइपलाइन कैसी दिख रही है अगले क्वार्टर्स में? अभी तो ट्रैक्शन अच्छा है, आपने कहा सारे वर्टिकल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. डील पाइपलाइन और एक्विजिशंस पर आपका क्या फोकस होगा? Which area do you think इस वक्त lucrative है, attractive है, जिसमें आप एंटर करना चाहेंगे? कुछ है prospects that you're looking at, sir? So deal momentum is very strong everywhere. It's the conversation, nature of demand has changed. Large deals की जगह lots of digital transformation, which typically comes जो pod based होते हैं, 10 लोगों का, 15 लोगों का pod based, to drive new things that need to be done. Digital transformation. So that is the nature where customers are sourcing for expertise on a vertical and digital technologies rather than scale. That used to be typically the way companies used to do. Large deals, which typically are, support, maintenance kind of things, are not priorities for customers right now because there is so much, new that needs to be done by the customers. So pipeline is strong on your, and I think it will continue to be strong for the next 3 to 5 years in my view. Okay, acquisition. We acquired one company called QLogic last year, which has been a strong addition. We continue to evaluate companies, analytics, data, design,
experience, and a whole bunch, IoT, cloud, whole bunch of companies. We keep looking, but our focus, we have done 7 acquisitions since in the last 6 years, but nothing has been to drive up revenue. We are all capability-led acquisitions. And that will continue to be the focus, but it's a shareholder money. We have to have the right price points for it. Market is very inflated, but we keep evaluating the right option. When there is a right option with right capabilities and right valuation, we'll definitely make a move. Okay, sir, as any prudent chief will do. Thank you very much. आपने हमें समय दिया और बताया किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा और आगे क्या आउटलुक दिख रहा है सेक्टर में और आपकी कंपनी में. Thank you very much, sir.